श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। શ્રી ગુસાઈજીનું નામરત્નાખ્ય સ્તોત્રનું 86મું નામ સર્વસહ સર્વ સહાય નમઃ। શ્રી ગુસાઈજી સર્વ કંઈ સહન કરે છે। વિવરણમાં દેવકી નંદનજી કહે છે, કોઈ ભક્ત અજાણતામાં શ્રી ઠાકોરજીનો અપરાધ કરે તો તેને દંડ આપી શ્રી ગુસાઈજી તેનો અપરાધ નિવૃત્ત કરે છે, પરંતુ તે ભક્તને ક્લેશ થવા દેતા નથી, તેઓ જ બધું સહન કરે છે। આપ કૃપાસાગર છે, અત્યંત કોમળ હૃદયવાળા છે, ભક્તોના ઉદ્ધાર માટે જરૂરી પગલાં અવશ્ય લે છે, પણ ભક્તને કોઈ વાતે ઓછું ન આવે તેનું પણ ધ્યાન રાખે છે। ભક્ત ભૂલ કરે તો શ્રી ગુસાઈજી પોતે સહન કરી લે છે। આ નામમાં એક બ્રાહ્મણી ઉપરાવારી અનન્યા જે મેનાથી પ્રગટ્યા છે, વાર્તાજી નંબર 110, તેમનું ચરિત્ર આવી રહ્યું છે અને સાથે શ્રી વલ્લભનો નવરત્ન ગ્રંથ પણ આમાં આવી રહ્યો છે। ये तामस भक्त है, लीला में इनको नाम अनन्या है, मैनाते प्रगटी है। सो आ ब्राह्मणी ने श्री गुसाई जी ब्राह्मणी को श्री गुसाई जी ने अडेल में नाम सुनायो, कृपा करी ब्रह्म संबंध करायो, पाछे बिनती करी, महाराज मेरे दिन कटत नहीं, कछु टहल दीजिए। तब श्री गुसाई जी आपको श्री नवनीत प्रिय जी की रसोई में परचार्गीकरण की कही। खासा बासन मांजती एक दिन बासन में भीतर कारो दाग रही गयो, खबरी न परी। श्री गुसाई जी राजभोग धरन लागे। श्री नवनीत प्रिय जी ने कही, कालीदार के वासन में दाग रही गयो तो ताते रसोई छुई गई, परचार गनी बासन आछे मांजे नहीं। सगरी सामग्री गाय इनको डारी दीनी, पाछे और सामग्री करी मंगलाते राजभोग पहुँचे। श्री गुसाई जी अपनी बैठक में पधारे, ब्रजवासी को आज्ञा किए ब्राह्मणी को पार उतारी आओ। वाने पूछी, राज मेरो अपराध कहा है? तो वन तब श्री गुसाई जी कहे, कालीदारी के बासन में कारो दाग रही गयो। तो वाने कही, अनजाने रही गयो होएगो, या बात में हो कहा करो। तब श्री गुसाई जी वापर बहुत रीस कीनी, ब्रजवासी को आज्ञा किए, या को अडेल के घाट अभी नाव में बैठारी पार उतारी आओ। तब ब्रजवासी वा ब्राह्मणी को अडेल के घाट पर नाव में बैठारी के पार उतारी आयो। तो ब्राह्मणी को श्री गुसाई जी पर नेकहू दोष बुद्धि न आई। ईश्वर दुबे ना तामस भावનું સ્વરૂપ છે અને ઈશ્વર દુબે શ્રી ગુસાઈજી પાસે માંગ્યું હતું, જો મહારાજ મેં તિહારે ઉપર કબહુ અપ્રસન્ન ન હો, માટે અહીંયા પણ દોષ બુદ્ધિ નથી આવી। मन में कही, जो प्रभु है फेरी बुलावेंगे, प्रभु अपने जीव को सर्वथा छोड़त नहीं। અને અહીંયા વાર્તાજીના શરૂઆતમાં જ આવે છે, ચિંતા કાપી ન કાર્યા નિવેદિતાત્મભી કદાપિતિ ભગવાન અપી પુષ્ટિસ્થ। જીવ તો કૃપાના માર્ગમાં રહેલો છે, પણ તેની સાથે કોણ છે? ભગવાન સ્વયં રહેલા છે। ન કરિષ્યતિ લૌકિકીમ ચ ગતિમ, લૌકિક ગતિ તો સર્વથા નહીં થવા દે। હવે આવે છે, નિવેદનમ તુ સ્મર્તવ્યમ સર્વથા તાદૃશૈ જને, લોકે સ્વાસ્થ્યમ તથા વેદે હરિસ્તુ ન કરિષ્યતિ, પુષ્ટિ માર્ગ સ્થિતો यस्मात् साक्षिणो भवता किला। ब्राह्मणी विचारी, अब मैं निर्वाह कैसे करूँ? घाट पर एक छानी छवाई लीनी, गाय बैल बहुत आवे, उपरा थापे, काहू भले मनुष्य सो चून मांगी के ले। आ अवस्थाમાંથી બહાર આવવા તેમણે કોઈ લૌકિક સહાય પણ નથી લીધી અને વેદના કોઈ વાક્યનો આશ્રય પણ નથી કર્યો। લોકે સ્વાસ્થ્યમ તથા વેદે હરિસ્તુ ન કરિષ્યતિ, और झोपड़ी में परी रहे, अहरने श्री गुसाई जी के चरण कमल को स्मरण करे। निवेदनम तु स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशै जने, कछुक दिन में उपरांत को बड़ो ढेर भयो। हवे आवे छे, सर्वेश्वरस्य सर्वात्मा निजेच्छात करिष्यति।
एक दिन ब्रजवासी सो श्री गुसाई जी आज्ञा किए, उपरा नाही सो नाव ले जाए प्रयाग जाए उपरा ले आओ, जो दाम लगे સો દે આવ. સર્વના ઈશ્વર છે, સર્વના આત્મા છે અને નિજ ઈચ્છાથી કરશે. દામ શું લાગવાના છે? બ્રાહ્મણીની વાપસી થવાની છે. હવે આવે છે સર્વેશામ પ્રભુ સંબંધો ન પ્રતિ એકમ તે સ્થિતિ અતોન્યો વિનિયોગેપી ચિંતા કા સ્વસ્ય સોપી ચેત. ब्रजवासी बड़ी नाव लेके गयो, वाको देखी ब्राह्मणी ने श्री कृष्ण स्मरण કર્યો और कही मेरे पास उपरा थापे है सो सब श्री गुसाई जी के है, अन्य विनियोग છે જ નહીં. મારું તો જે છે તે શ્રી ગુસાઈજીનું જ છે. મેં શ્રી ગુસાઈજી કી સેવકીની હું. નાવ ઉપરાંત સો ભરે 5-7 મનુષ્ય संग लगाए ब्रजवासी उपरा ढोवन लाग्यो. श्री गुसाई जी पूछे, अब की बेर उपरा बहुत आछे है और बहुत बेगी लायो, उपरा कहाँ मिले? आछा केम न होय? सतत आपનું ચિંતન કરતા બ્રાહ્મણીએ કર્યા છે. હવે આવે છે અજ્ઞાનાદ થવા જ્ઞાનાદ કૃતમ આત્મનિવેદનમ યય કૃષ્ણ સાત્કૃત પ્રાણે તેષામ કા परिदेवना. ब्रजवासी ने ब्राह्मणी की दंडवत करी और कही, महाराज यह परचारगनी आप पार उतारी. आ तेनी अज्ञान अवस्था हती. सो वह झोपड़ी छाई के बैठी है, गोबर के ऊपरा थापत है और कहे श्री गुसाई जी के ऊपरा सब है और मैं हूँ श्री गुसाई जी की दासी हूँ. आ तेनी ज्ञान अवस्था. अने श्री गुसाई जी ने कही, वह ब्राह्मणी ने कही, यह नाव ले जाओ और दूसरी नाव लाओ. यह सुनी श्री गुसाई जी बहुत प्रसन्न भये. या को दोष बुद्धि नहीं, एक रस भाव है ताते प्रसन्न भये. एक रस भाव छे, कृष्ण सात्कृत प्राणनी अवस्था छे. तब श्री गुसाई जी ब्राह्मणी को बुलावे को विचार किए. હવે આવે છે તથા નિવેદને ચિંતા ત્યાજ્યા શ્રી પુરુષોત્તમે વિનિયોગે પિસા ત્યાજ્યા સમર્થો હિ હરિસ્વત. નિવેદનમાં કે વિનિયોગમાં ચિંતા છોડી દેવી. અને ब्रजवासी फेरी नाव ले गयो और ब्राह्मणी से कोई, श्री गुसाई जी तेरे पर प्रसन्न होय तो को बुलाई है, समर्थो ही हरिस्वत. ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न भई और वह पार आई. श्री गुसाई जी नाइवे को पधारे अत्यंत आतुर हुई जल घरा में आई, दंडवत करी. चित्तोद्वेगम विदायापि हरिर्यद्यत् करिष्यति तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंता द्रुतं त्यजेत. नेत्र में ते आंसू जात है, मुख थे कच्छू बोलत नहीं. ऐसी दशा, उद्वेग થઈ ગયો છે, પણ જે પણ થાય છે ભગવદ ઈચ્છાથી થાય છે, ઠાકોરજીની લીલા છે તેમ માની चिंता छोड़वी. श्री गुसाई जी को बहुत दया आई. अपने श्री हस्त कमल से ब्राह्मणी को हाथ पकड़ी ठाड़ी करी. तेरो अपराध थोड़ो हतो और दंड बहुत भयो, पर तू धन्य है, तेने ऐसी धीरज धरी. ब्राह्मणी ने कही, महाराज अपराध तो बहुत हतो, सगरी सामग्री छुई गई, प्रभु को ढील परी, मोको तीनों लोक में कहूँ ठोर न हती. आप परम दयाल है, सो थोरे में मेरो अपराध निवृत्त किए. અને હવે આવે છે सेवा कृति गुरु आज्ञा. पाछे श्री गुसाई जी चरणामृत दिए और कहे, बेगीनाय अपनी सेवा में लगो. अतः सेवा परम चित्तम विदायस्ति अताम सुखम. श्रीमुख के वचन सुनी बहुत प्रसन्न भई. भय संयुक्ता अत्यंत प्रीति सो सेवा करन लागी. હવે આવી રહ્યું છે તસ્માत् સર્વાત્મના નિત્યમ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ. कच्छुक दिन में नवनीत प्रिय जी सानुभावता जनावन लागी. एक दिन सैन भूग के दूध में बूरा थोरो पर्यो हतो. श्री नवनीत प्रिय जी वाको जताए अर्धरात्रि समय श्री गुसाई जी के पास जाए विनती करी, महाराज आज सैन भोग के दूध में बूरा थोरो हतो. શરણનો ભાવ છે. શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ માટે શ્રી ગુસાઈજી પાસે જઈને વિનંતી કરી છે, ભંડારીને સીધું નથી કીધું. અને શ્રી ગુસાઈજી
वाह भंडारी सो कीजे कि आज पाछे कछु घटती मती करियो। सो या प्रकार ब्राह्मणी के पर श्री नवनीत प्रिय जी बहुत प्रसन्न रहते। सो वह ब्राह्मणी श्री गोसाई जी की ऐसी परम कृपा पात्र भगवती, इनकी वार्ता कहाँ ताई कही। श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय।